गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ट्रेनिंग ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस स्पेस एजेंसी नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन, वो अभी इंडिया में थे। उन्होंने बोला है कि नासा जो है वो इंडियन एस्ट्रोनॉट को एक ट्रेन करेगा ताकि इंडियन जो है स्पेस स्टेशन का प्रोग्राम है उसके लिए एक तरह से एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बाय द एंड ऑफ 2024 जो है वो उनको रखा जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इंडियन स्पेस स्टेशन जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो कि इंडिया बनाएगा और 2035 तक इसको जो है कंप्लीट करने का जो है एक मिशन रखा गया है पीएम मोदी द्वारा। जो ये इंडियन स्पेस स्टेशन है ये स्मॉलर होगा एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इसका मास लगभग 20 टन्स का होगा और इसको माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 400 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर इसको प्लेस किया जाएगा और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, रेडिएशन प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, ये सारे जो है टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये क्योंकि चाहिए होती हैं स्पेस स्टेशंस पर, तो इंडिया जो है वो इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो है वो काम करेगा। उसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी चाहिए होंगी, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी, एडिक्वेट फंडिंग भी चाहिए होगी। तो एक तरह से एक बहुत ही न्यू और नॉवल जो है एक्सपीरियंस होगा इसरो के लिए ये स्पेस स्टेशन बनाने का। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम जो ये ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट की दी जा रही है, निसार जो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, उसको भी जो है एक तरह से रिव्यू किया गया है नासा के एडमिनिस्ट्रेटर की विजिट के बाद। तो निसार जो है वो आपका फर्स्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि डुअल फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करता है। अर्थ के जो है लैंड और आइस कवर्ड सर्विसेज को हर 12 दिन में जो है ये सर्वे करेगा और 3 साल की इसकी ड्यूरेशन होगी। ठीक है। तो इसका मेन एम जो है निसार सैटेलाइट का वो ये है कि नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं हमारे अर्थ के, इंक्लूडिंग इकोसिस्टम डिस्टर्बेंसेस, आइस शीट कोलैप्स, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, लैंडस्लाइड्स, इन सब को जो है वो स्टडी करना, ऑब्जर्व करना। निसार जो है उसको एक लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा इस ऑब्जर्वेटरी को या इस सैटेलाइट को, और ये अर्थ के चेंजिंग इकोसिस्टम्स, डायनामिक सर्विसेज और आइस मासेस को जो है वो मेजर करेगा। ठीक है। तो ये हमको डेटा जो है अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमको डेटा देगा बायोमास, नेचुरल हैजार्ड्स, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर, इन सब के बारे में भी। ठीक है। तो ये क्यों क्यों ड्यूअल फ्रीक्वेंसी का रडार है ये, क्योंकि इसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों ही जो है वो डिस्टिंक्ट रडार लगे हुए हैं, ताकि चाहे कितना भी क्लाउडी वेदर हो, चाहे कितनी भी रात हो, जो ये है अर्थ की ऑब्जर्वेशन ये हर टाइम पर कर सकेगा। अब नासा जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लेकर जा रहा है हमें। ठीक है। हमारे एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग के लिए 2 वीक लॉन्ग मिशन के लिए नासा और इसरो दोनों ही जो है एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाएंगे, ये डिसाइड किया गया है। और नासा जो है वो 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी जो है डीकमीशन करने का प्लान कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन ओशन टूना कमीशन। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ जो है उन्होंने 19th वर्किंग पार्टी जो है मीटिंग बुलाई है इंडियन ओशन टूना कमीशन की, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइग्रेटरी टूना और टूना लाइक फिशेस रिसोर्सेज जो है इंडियन ओशन में उसको जो है सस्टेनेबली मैनेज करने के लिए मैंडेटेड है। इसका जो एग्रीमेंट था इस ऑर्गेनाइजेशन का वो फूड एंड कल्चर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस की है उस वहाँ पर अडॉप्ट किया गया था 1993 में, और कॉपरेशन जो है कॉन्ट्रैक्टिंग मेंबर्स में प्रमोट करने के लिए इसको साइन किया गया था। ठीक है। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ फिशरी रिसोर्सेज के लिए। तो इंडियन ओशन जो है सेकंड लार्जेस्ट टूना फिशरी है वर्ल्ड की, और इस इंडियन ओशन टूना कमीशन के 31 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो विक्टोरिया में है, मतलब सेशल्स में है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक्सपर्ट्स का कहना है कि वर्ल्ड का जो न्यू बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है उसमें कोई रियल फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं हो पाई है। ठीक है। तो जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है इसको बनाया गया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए नेचर रिस्टोरेशन और रिन्यूअल में, लेकिन ऑफ कोर्स ये कोई खास इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आ पाई है। ठीक है।
इस फंड को एस्टैब्लिश किया गया था सेवन्थ असेंबली ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वैंकूवर में। और 23 टारगेट्स जो रखे गए थे कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में, उनमें से ये उसी को रियलाइज़ करने के लिए इस फंड को एस्टैब्लिश किया गया था। इस फ्रेम वर्क को अडॉप्ट किया गया था 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में, जो यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की हुई थी लास्ट दिसंबर में। इसको हमने कवर भी किया था एक्सटेंसिवली। और इसको मैनेज कौन कर रहा है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इस फैसिलिटी का क्यूमुलेटिव बजट रखा गया है $5.25 बिलियन 2022 और 2026 के बीच। इसमें से 36% जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है के लिए ईयरमार्क रखा गया है इसको, ठीक है। और 16 इसमें मेंबर कंट्रीज़ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के होंगे, 14 मेंबर्स जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के होंगे, और 2 मेंबर जो हैं सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के और फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज़ के होंगे, ठीक है। डिसीजन जो भी होगा इसके फंड का वो कंसेंसस से लिया जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है वो 75th एनिवर्सरी अपनी उन्होंने सेलिब्रेट की है 26 नवंबर को। तो ये एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही जो है होती हैं। और नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 के अंदर इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर बनाया गया है। और ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि कैडेट्स जैसे कि आपके हाई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से ऑल ओवर इंडिया जो है वो रिक्रूट किए जाते हैं। और कैडेट्स जो है उनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। कैरेक्टर, करेज, कॉमरेडशिप, डिसिप्लिन, ये सब क्वालिटीज़ डेवलप की जाती है कैडेट्स में। ह्यूमन रिसोर्सेज, यूथ को मोटिवेटेड रखना, ये सब क्वालिटीज़ इसमें जो है वो डेवलप की जाती है यूथ में। और एक करियर इन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ भी उनको जो है वो एक सूटेबल एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है। इसको हेड कौन करता है? एक डायरेक्टर जनरल, जो कि आर्मी ऑफिसर होते हैं, रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो कि लार्जेस्ट कंज्यूमर और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, इंडिया जो है वो चेयर बना है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर ईयर 2024। तो आईएसओ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि कंडीशंस इंप्रूव करना चाहती है वर्ल्ड शुगर मार्केट की। इसमें 87 मेंबर स्टेट्स हैं, 87% ग्लोबल प्रोडक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं। आईएसओ जो है वो बेस्ड इन लंदन है। और आईएसओ एग्जिस्ट करती है 1992 के इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट के बेसिस पर, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना, इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस करना, ट्रेड फैसिलिटेट करना, इंक्रीज डिमांड फॉर शुगर को encourage करना, और जो है वर्कशॉप, सेमिनार्स के थ्रू जो है ये डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ करने का काम आईएसओ करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फाताह 2। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईरान ने रिसेंटली एक हाइपरसोनिक वेपन फाताह 2 जो है वो अनवेल किया है। तो फाताह 2 जो है, फाताह का बेसिकली जो है फाताह का मीनिंग जो है फ़ारसी में होता है कॉन्करर, ठीक है। तो फतह जो है वो एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको ईरान ने डेवलप किया है। जो फाता 2 है वो फाता का ही सेकंड वर्जन है और फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का इसमें यूज़ किया गया है। इसकी स्पीड जो है वो मैक 15 तक है, मतलब 15 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और इसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर्स होती है, ठीक है। और सॉलिड फ्यूल पे चलता है ऑफ कोर्स ये। और इसकी इतनी स्पीड है कि ये ऑफ कोर्स एयर डिफेंस सिस्टम्स को इवेड कर सकता है। वैसे भी आपको पता ही है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो होते हैं वो इतने तेज़ होते हैं, इतनी स्पीड में चलते हैं वो, कि जो सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स होते हैं वो उनको टारगेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is training of Indian astronaut. This topic is important for your science and tech section. So US Space Agency NASA will train an Indian astronaut for a mission to the International Space Station by the end of 2024. So this has been revealed by the administrator of NASA during his visit to Delhi recently. So we are also planning to send our own space station into the space by 2035. This will be called as the Bharatiya Antariksh Station, and this vision has been shared by PM Modi
ISRO scientists that we have to set up an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. So, what will be the features of this Indian space station? So, it is being said that it will be smaller than the Indian International Space Station, and it will have a mass of about 20 tons, and it will be used for microgravity experiments. It will orbit Earth at an altitude of about 400 kilometers, but it will not be an easy task because India ISRO may have been very experienced in satellite development, but constructing and maintaining a space station will have a completely different set of challenges. For example, it would involve uh, building up life support systems, radiation protection, long-term structural integrity of the space station. So we would have to seek international collaboration and explore private sector investments also. So the NASA administrator has also reviewed the NISAR, that is the NASA ISRO Synthetic Aperture Radar, which is basically the first radar imaging satellite which will use dual frequencies, both the L band and S band. So it will basically survey all of Earth's land and ice covered surfaces every 12 days. It will have a 3-year duration, and it will observe the most complex natural processes of our planet. So it will be a low Earth observatory which will measure Earth's changing ecosystems, dynamic surfaces, and the ice masses. And it will also gather information related to biomass, natural hazards, sea level rise, and groundwater. So NISAR will also use two distinct radar frequencies, L band and S band, so as to get the imaging of the Earth uh, even during cloud cover or during night. So NASA will be helping us in exploring the space station, and both NASA and ISRO will also be setting up a joint working group to collaborate on radiation impact studies. Okay, micro meteoroid and orbital debris shield studies, space health and medicine aspects also. And because NASA is planning to decommission the International Space Station by 2031, India will also be getting help, or India will also be able to collaborate with NASA in commercial replacement facilities, which will be needed for NASA to maintain a constant human presence in low Earth orbit. So, what the next topic is Indian Ocean Tuna Commission. This topic is important for your environment and your economy section. So, Department of Fisheries is organizing 19th Working Party on Data Collection and Statistics of the Indian Ocean Tuna Commission. So, this Indian Ocean Tuna Commission is an intergovernmental organization which is mandated to sustainably manage highly migratory uh, tuna and tuna-like fisheries resources in the Indian Ocean. So the agreement for this IOTC was adopted by the Food and Agriculture Organization of UN in November 1993. The objective of IOTC is to promote cooperation amongst contracting parties for sustainable use of fishery resources. So Indian Ocean, you know that it is the second largest tuna fishery in the world, and currently IOTC has about 31 contracting parties. Its headquarters is located in Victoria, that is in Seychelles. So the next topic is Global Biodiversity Framework. This topic is important for your environment section. So recently experts have said that world's new biodiversity framework fund currently lacks any real financial commitment to meet its conservation targets. So this global biodiversity framework fund, we read about it last year, that it was set up to create or ramp up investment in nature restoration and renewal. So it was established at 7th Assembly of the Global Environment Facility in Vancouver, that is in Canada, and was aimed to help countries achieve the 23 targets which were set up under the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. So this framework was adopted at the 15th COP to the UN Convention on Biological Diversity, which was held in December last year. So this fund is being managed by the Global Environment Facility. This facility has a cumulative budget of about $5.25 billion for 2022 and 2026 period, of which 36% has been earmarked for biodiversity. Okay, so this fund council has been kept open to representation for the following members: certain members from developing countries and other from developed countries, and two members will also be participants from Central and Eastern Europe countries and former Soviet Union countries. So decisions of this fund council are taken by consensus.
So the next topic is National Cadet Corps. This topic is important for your governance and your security section. So recently, National Cadet Corps have celebrated the 75th anniversary on November 26th. 2023. So what is National Cadet Corps? So it's a tri-services organization which comprises the Army, Navy and Air Force, and it came into existence it came into existence under the National Cadet Corps Act of 1948, and it functions under the Ministry of Defense. So it is a voluntary organization and it recruits cadets from high schools, colleges, and universities all over India. And the cadets are given basic military training uh, in small arms and parades. So the aim is to develop qualities of character, uh, courage, comradeship, discipline, and to create a human resource of organized, trained, and motivated youth. So the aim is also to create a suitable environment uh, to motivate our youth to take up a career in the armed forces. So it is headed by the Director General. Okay, so the next topic is International Sugar Organization. This topic is important for your economy section. India, which is the largest consumer and second largest producer of sugar globally, has recently been named as the chair of the International Sugar Organization for the year 2024. So, ISO is an intergovernmental body which is devoted to improving conditions in the world sugar market. It has 87 member states which who represent 87% of global production. It's 64% of consumption, 92% of sugar exports, and 34% of sugar imports. So, it is based in London and it exists to administer the internationally negotiated International Sugar Agreement of 1992 to ensure that there is enhanced international cooperation with respect to sugar matters. It also provides a forum for intergovernmental consultations, facilitate trade, and encourage increased demand for sugar. Okay, so to fulfill these objectives, ISO also undertakes many distinct activities, including workshops, seminars, etc., uh, with widely recognized statistical and analytical work. Okay, so the next topic is Fatah Tour. This topic is important for your security section. So Iran has recently unveiled its new and improved hypersonic weapon called the Fatah 2. So Fatah basically in Farsi means conqueror. So Fatah is a hypersonic ballistic missile. It has been developed by Iran and it is a new version of the first domestically made hypersonic ballistic missile named Fatah. So Fatah 2 is the second version of it. So it is equipped with a hypersonic glide vehicle warhead which can maneuver and glide at hypersonic speeds. So it uses a liquid fuel rocket propellant and it has a range of about 1500 kilometers with a velocity of about Mach 15, which means 15 times the speed of sound. So it is equipped with a warhead which has the spherical engine which runs on solid fuel, and it allows it to change course even when it is outside the temperature I'm sorry outside the atmosphere. And it because of its high speed, it is able to evade the air defense systems. So what is a hypersonic missile? So hypersonic missile is a weapon system which flies at least at the speed of Mach 5, which means 5 times the speed of sound, and it is highly maneuverable. So because these missiles are extremely fast and they are very hard to detect, uh, and that's why the surface to air missile defense systems are unable to target them. Okay, so that's why the air defense systems are not truly suitable to target these hypersonic missiles. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.